Before inviting our first esteemed speaker, Dr. Niyamasabha Acharya, Honorable Speaker of the Gujarat Legislative Assembly, may I request my technical team to kindly relay a very short film on the life and work of Shri Dr. Niyamasabha Acharya. Dr. Niyamasabha Acharya, member of Gujarat Legislative Assembly from Anjar, Dr. Niyamasabha Acharya is a BJP leader and has also served as member of the Gujarat Family Planning Council. Earlier in 2002 and 2007, she had won Legislative Assembly seat as a Congress candidate. She is a medical doctor and social worker. Thank you, my technical team. It's a kind request to all the dignitaries to kindly maintain the time of 10 minutes so that we can smoothly run the session. With a huge round of applause, let us welcome Dr. Niyamasabha Acharya ji for addressing the gathering. Good afternoon, everybody. It gives me immense pleasure to participate in this unique National Women Legislator Conference under the auspices of 75th anniversary of our great nation independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. On this occasion, I compliment the Kerala Legislator and the government of Kerala for bringing together these highly talented women legislators of our country, even after suffering catastrophic effect of epidemic of COVID-19. At this stage, I take privilege. Where is Mr. M.B. Rajesh? He's gone already? I give my compliments and congratulations to Kerala Speaker, Mr. M.B. Rajesh, and Government of Kerala to giving us this platform and the opportunity. And this is an historical event where all women are together and we are going to discuss the issues and problems and solution of women legislators. Speaking about the right available to women in the country, rights are classified in two categories, namely constitutional rights and legal rights. Based on the complement to gender equality, is reinforced by the fact that we have endorsed various international efforts and rectified various international conventions and human rights instruments towards securing equal rights for women since the adoption of United Nations Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women in 1979. Some important legislation are the Equal Remuneration Act of 1976, the Hindu Marriage Act of 1955 as amendment in 1976, the Marriage Act, the Immoral Traffic Act of as amended in 1986, the Dowry Prohibition Act as amended in 1984, and the second amendment brought in 1986 makes the husband or in-laws punishable. Prohibition of Child Marriage Act 2006, the Medical Termination Act of 1971 is amended in 2002. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, the Protection of Women Against Sexual Harassment at Workplace and various other amendable, which includes the Indian Divorce Act, the Hindu Succession Act, the Marriage Laws Amendment Acts, etc. So many rights, so many amendments as well, so many legal acts we have. But even after all these laws introducing in
survey conducted by the Nation Family Health Surveys 5. The said NFHS survey also highlights that among the women who have experienced physical and sexual violence and sought help, the most common source of support was the woman's own family. And in 77, the report also indicates that 77% of women surveyed never sought any help or told anybody about the violence inflicted on them. So we always keep silence, and that is why the women are suffering. Shortcut, because I have to speak only 10 minutes. In the other field, wherever involvement of women is concerned, under the nation mission of empowerment of women to achieve intersectorial convergences of all pro-women and women concrete programs across ministry in the government, we as legislator have important role in getting those programs implemented at the grassroots level itself. And this national mission is engaged in striving to achieve social, economic and legal empowerment of women by identifying the gaps in development goals and setting up the appropriate institutional framework to tide over bottlenecks in the process of ensuring coordinated and effective services delivery in women at grassroots level. In the political front, you all are aware that the 73rd and 74th amendment to our constitution are landmark enactment towards the ensuring the 33% of the total seats of members and of the chairperson are of women in all elected offices in local bodies. But the constitution 110 and 112th amendment bills 2009 for enhancing the cantonment of reservation for women from the 33% to 50% of total seats in panchayat and municipalities respectively are pending in the Lok Sabha. Whenever some of the states have already increased the seats to 50%, so Gujarat and Kerala is a state where we have started giving 50% reservation in panchayat and municipalities. Constitution 108th Amendment Bill seeking reservation of 1/3 of the seat for women in the Lok Sabha and the state legislature has been passed by the Rajya Sabha, but it is still pending for consideration in the Lok Sabha. Wherever we go, they ask, what about the 50% reservation? Today, 160 women legislators have attended this conference. And I ask that 418 legislators are there in India. 9% women legislators are there in India. So everybody is asking us the question where we go, that when the 50% reservation for women comes. So this is the starting, and this is the historical event, I will say. And in this history, the name of M.B. Rajesh will be in the front, that he has given us this opportunity. So I wanted to give him standing ovation, but he is not there now. Where is he? Oh, so let us give a standing ovation to Mr. M.B. Rajesh. Give a standing ovation to M.B. Rajesh. Please, my request. Thank you so much, Mr. Rajesh. It is observed that many parties in our country have separate women right wing inside the party, or the presence of women in the party literacy as far from satisfactory. This makes it imperative for the political parties to encourage women in the decision-making process of the party. They need to be accommodated in the main party
literacy. Hence, among other things, there should be a legislation to make it mandatory for political parties to provide for a representation of at least 30% of organization position at every level for women, and also distribute at least 30% of their party tickets amongst the women at the time of election. I request Mr. Rajesh that at the end of the conclusion of this meeting, with convention, we should resolve that there should be given 30% reservation for women legislator. So this will be the outcome of this convention. Coming to the situation of women in my state, I will like to speak about the Gujarat. क्योंकि हमारे गुजरात के सपूत आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे सीएम रहे, 13 साल गुजरात के सीएम रहे, और उनके साथ 13 साल काम करने का एज ए एमएलए मुझे मौका मिला. It is my proud and my privilege to speak about him and speak about the Gujarat state, what they are doing for women. I will just enumerate few things. When Narendra Bhai has become the CM of Gujarat, first of all, what he said, उन्होंने बोला, सबसे पहला सेंटेंस उनका, सबसे पहला मैसेज उनका ये था कि जिस देश में 50% पॉपुलेशन महिलाओं का होता है, वो देश की प्रगति, वो देश का विकास, वो राज्य का विकास महिलाओं के डेवलपमेंट के बिना हो नहीं सकता है. So women development is the priority of Narendra Bhai Modi when he become the CM. And then not only that he speak out and given the message, पर उन्होंने गुजरात में सबसे पहले वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्ट्री अलग बनाया, और वो मिनिस्ट्री में उन्होंने आनंदीबेन पटेल को, जो आज यूपी के गवर्नर है, उनको मिनिस्टर बनाया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का. और तब से लेके आज तक वुमेन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी गुजरात में. वो सब पॉलिसी में मैं 5-6 चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी दृष्टि से अगर कोई भी है तो सेफ्टी ऑफ द वुमन है. और वो पॉलिसी के लिए उन्होंने 33% वुमन रिजर्वेशन सबसे पहले पुलिस में दिया. तो आज गुजरात में आप देखोगे, जहाँ पे भी देखोगे महिलाएं आपको पुलिस के ड्रेस में सज्ज दिखेगी और ड्यूटी करते हुए, तो देन वी फील प्राउड कि वुमन आर सर्विसिंग एज ए पुलिस. सो उसके बाद नारी पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन बनाया कि जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में महिला पुलिस स्टेशन बना, नारी अदालत बनी. और अभ्यम हेल्पलाइन 181 डायल करो आप, फटाफट पुलिस की वाहन, आप जहाँ पे भी तकलीफ में वहाँ वो आ जाएगी, और पुलिस और डॉक्टर सब लोग होंगे और उसको हेल्प करेंगे. तो 181 हेल्पलाइन वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमन. इस तरह से मैं बताऊंगी आपको कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. और उन्होंने जिस तरह से इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए वुमन के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई, उसमें आज एमएसएमई में देखो तो महिलाएं भी है, और आप सेल्फ हेल्प ग्रुप जिस तरह से बना के डाउन ग्रास रूट में जो महिलाएं हैं उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने जिस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई और उनको जितनी फैसिलिटी दी है, आज हम देख रहे हैं गांव-गांव में हर जगह छोटे वहाँ से रूट से महिलाएं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है, गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करती है, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, ऑन द गेट फाइनेंस. महिलाओं को कोई भी इकोनॉमिक कार्यक्रम करना है तो सबसे पहले ज़रूरत इनको फाइनेंस की पड़ती है, और फाइनेंस मिलेगा तो सी कैन डू द बेस्ट थिंग. तो उसके लिए जिस तरह से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि बिना गारंटर और बिना इंटरेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को फाइनेंस किया जाता है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं समझती हूँ.
महिलाओं के लिए है, क्योंकि एक घर में अगर इकोनॉमिक वुमेन के हाथ में है, वो कुछ अपनी आमदनी इकट्ठी कर सकती है, तो उसका मान सम्मान बढ़ता है। चाहे वर्किंग वुमेन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड ये जो पॉलिसी है उससे महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है, ऐसे में मानती हूँ। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी कि नरेंद्र भाई जिस तरह से गुजरात के फर्स्ट टाइम सीएम बने, बाद में उन्होंने आनंदीबेन को गुजरात का फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ गुजरात इज आनंदीबेन पटेल, एंड फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ गुजरात मुझे बनाया, तो ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, पर हर एक महिलाओं के लिए एक गौरव की बात इसलिए है कि महिला को अपॉर्चुनिटी देना यही सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है, तो मैं अंत में यही बताऊंगी कि कमिंग टू द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन माय स्टेट, गुजरात द स्टेट गवर्नमेंट promulgates the budgetary policies and implication addressing gender equality through gender responsible strategies, schemes and programs, so as to ensure that the fruits of development reach to every individual based on the global agenda of sustainable development goal for empowering women in the society. Since 2014 to 15, the state government has become publishing gender budget pertaining to women specific financial allocation. The document provides insight into various initiatives by the state government. It also enables the development of to determine the need and justification for the gender specific allocation in various sectors. Gender budgeting process is now institutionalized with the state budgeting system, and for the sum, the gender budget statement 2022 to 23 has been prepared in line with the state budget 2022-23, in which we have around 1,009 major schemes under 100% provision towards women for their education, protection, healthcare, livelihood as the primary objectives. From this, the gender-oriented allocation with scheme of 100% and 33 to 99% for women can be recognized, and the government do hope that these documents would help in addressing gender gap, if any, and direct the prospective public expenditure on women and girls. Such a system would be useful in strengthening the state's effort, the holistic development and empowerment of women in the state. अंत में इतना ही बताऊंगी कि women empowerment is the main topic all over. We always say empowered women. यहाँ पे जो आप सब आए हैं, all are empowered women, and I will say that जो problems है, महिलाओं के जो issues है, उनका जो solution है, वो विषय में जिन्होंने PhD किया, मैं तो डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल डॉक्टर, पर यहाँ बैठी हुई सभी महिलाएं ये PhD डॉक्टर है, क्योंकि सारा दिन महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए सोचती है और उसके लिए काम करती है, और पूरा एक्सपीरियंस यहाँ बैठी हुई हर एक महिलाओं के है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और इतना ही बोलूँगी कि जैसे यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात है, ब्रेकिंग द बायस इज टुडेज मेन टॉपिक। जो भी गैप है, जेंडर गैप, उसको पूरा करना है, और उसके लिए हम सबको मेहनत करनी है, ग्रास रूट लेवल से हमको मेहनत करनी है। और साथ में एक ही स्लोगन हमारी होनी चाहिए कि मैन एंड वुमन आर इक्वल पार्टनर ऑफ द लाइफ, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड दे आर सप्लीमेंट्री। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।